हेलो फ्रेंड्स मु श्रेया स्वागत जनाऊँ आम चैनल द क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। आई होप कि आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं निज निजर एग्जाम पाई कि बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन भी करुथिबे। तो सांग माने वर्तमान आमे माने डिस्कशन करबा साइकोलॉजी बा मनोविज्ञान विषय रे। आज डिस्कशन रे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 एमसीक्यू रही जहां को निहाती भाव रे आपण माने ध्यान देबे। फर्स्ट क्वेश्चन टी हमर रही द फ्रेज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रिफर्स टू व्हाट। Option A रही a particular setting wherein psychology is taught formally. Option B रही a specific arrangement where psychology is learned through activities. Option C रही the different set of approaches and beliefs used by different people to study psychology. Option D रही a school where teachers practice psychological methods to teach children. तो ये क्वेश्चन आमको पचरा गला स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी माने कौन बुझुच। ऑप्शन ए रे रहिला कौन ए पर्टिकुलर सेटिंग वेयर इन साइकोलॉजी इज टॉट फॉर्मली। गोटे पर्टिकुलर सेटिंग जो थी कि साइकोलॉजी फॉर्मली सिखा जाय थाए। ऑप्शन बी रहिला ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट वेयर साइकोलॉजी इज लर्न थ्रू एक्टिविटीज। गोटे स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो थी कि साइकोलॉजी को किछि एक्टिविटी माध्यम रे सिखा जाय थाए। ऑप्शन सी रही द डिफरेंट सेट ऑफ अप्रोचेस एंड बिलीव्स यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल टू स्टडी साइकोलॉजी। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहले कौन बुझा जाए ना डिफरेंट सेट ऑफ अप्रोच विभिन्न लोकों द्वारा बा विभिन्न मुनिंकर विभिन्न मत जो भली आमे माने कहि थाओ। तो विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार अप्रोच बाढ़ी टू स्टडी साइकोलॉजी साइकोलॉजी को पढ़िबा लागि तेबे ताकू ही स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बोली कहा जाय थाए। तेबे ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रिफर्स टू व्हाट। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी a field which uses principles from educational psychology, developmental psychology and behavior analysis to meet learning goals. Okay एमान को मध्यरु स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहा को रिफर करी थाए ए फील्ड व्हिच यूजेस प्रिंसिपल्स फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड बिहेवियर एनालिसिस टू मीट लर्निंग गोल्स। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन रिफर करी थाए ना लर्निंग गोल्स को मीट करबा को हेले स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी किछि प्रिंसिपल यूज करी थाए जहा क्योंकि से एजुकेशनल साइकोलॉजी रु, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रु एंड बिहेवियर एनालिसिस रु नै थाए। तो ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कार विथ साइड मिरर्स इज ए कंप्लीट कार एंड ए कार विदाउट साइड मिरर्स इज आल्सो ए कंप्लीट कार। थ्रू व्हिच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिस एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू स्ट्रक्चरलिज्म, ह्यूमनिज्म, गेस्टल्ट, फंक्शनलिज्म। तो गोटे कार जदि साइड मिरर अच्छी ताको आमे गोटे कंप्लीट कार कहिबा एवं जदि साइड मिरर नाही तथापि भी ताको आमे गोटे कंप्लीट कार कहिबा। तो यही प्रकार एक्सप्लेनेशन को स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दे थाए। ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर गेस्टलेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही गेस्टलेट्स बिलीव दैट। ऑप्शन ए वी टेंड नॉट टू रिसीव स्टिमुली एज सेपरेट यूनिट्स बट एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल। ऑप्शन बी रही द होल इज इम्पोर्टेंट एंड द पार्ट्स ऑफ इट आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। ऑप्शन सी रही द होल कॉन्स्टिट्यूट्स ए मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट which is different from their parts added together. So option D हो यार करेक्ट आंसर A and C। गेस्टलट बिलीव करिथांती जे we tend not to receive stimuli as separate units but as an organized whole। आमे स्टिमुली की गोटे सेपरेट यूनिट भाबरे ग्रहण करबा को चाहू ना हम किंतु एहा को गोटे ऑर्गेनाइज होल भाबरे ग्रहण करबा को चाहूचु। द होल constitutes a meaningful object which is different from their parts added together. Okay तो ऑप्शन डी है यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रोपाउंडेड फंक्शनल साइकोलॉजी। एमान को मध्यरु किए फंक्शनल साइकोलॉजी प्रोपाउंड करिसेंती विलियम जोन्स, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम स्टर्न। तो विलियम जेम्स हो यार करेक्ट आंसर। विलियम जेम्स प्रोपाउंड करिसेंती फंक्शनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्री एसोसिएशन टेक्निक इज रिलेटेड टू व्हाट। ह्यूमनिज्म, साइकोएनालिसिस, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म। तो फ्री एसोसिएशन टेक्निक टा साइकोएनालिसिस को रिलेट करी थाए। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज व्हाट।
फंक्शनलिज्म एंड गेस्टलेट साइकोलॉजी बोथ आसी थाए कौन ना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इज रिलेटेड टू व्हाट साइकोएनालिसिस गेस्टलेट स्ट्रक्चरलिज्म एंड कॉग्निटिविज्म. इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कहा को रिलेट करी थाए तो ऑप्शन सी है यार करेक्ट आंसर. इंट्रोस्पेक्टिव मेथड स्ट्रक्चरलिज्म को रिलेट करी थाए. हु डिवाइज्ड रेडिकल बिहेवियरिज्म जेबी वाटसन पावलव स्किनर ईएल थर्नडाइक. तो स्किनर डिवाइज करथिले रेडिकल बिहेवियरिज्म को. मोहन ए टीचर बिलीव्स दैट इंडिविजुअल्स फ्री विल their preferences and growth are important for understanding their behavior. He is influenced with. तो मोहन जने टीचर बिलीव करिथांती जे जने शिशुर बिहेवियर को बुझिबा को हेले तार निजस्व इच्छा एवं सेमानंकर प्रेफरेंस एंड ग्रोथ को देखिबा को पड़ी थाए. He is influenced by what काहंक द्वारा बा को इज्म द्वारा को बाद द्वारा से इन्फ्लुएंस अछंती ह्यूमनिज्म. ओके ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर. साइकोएनालिसिस इज आल्सो टर्म्ड एज साइकोएनालिसिस को आउ मध्य कोन कहा जाय थाए ना डेप्थ साइकोलॉजी बोली मध्य कहा जाय थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन. बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा ऊपर फोकस करी थाए ना ऑवर्ट बिहेवियर ऊपर फोकस करी थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस. दिस अप्रोच इज द बेसिस ऑफ स्टडिंग एमर्जेंट बिहेवियर टुवर्ड्स ए स्टिमुलस रिलीजिंग रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस टू स्टडी एंड प्रोवाइड फीडबैक. साइकोएनालिसिस थ्योरी बोथ बी एंड सी. तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन डी. चूज द ऑड वन आउट. वेटमेयर अब्राहम मैस्लो कोलर कॉटकोफ्का. तो यार करेक्ट आंसर टी हबो Abraham Maslow. Next question टी रही breaking of the mental perception into small chunks then studying them is related to humanism, cognitivism, behaviorism, structuralism. Breaking of the mental perception into small chunks माने किछि गोटे बड़ घटना को हम छोट छोट करिके भाग करिके जेते बेल ताको स्टडी करिबा ताको कोन कहै जिवो ना तार गोटे स्ट्रक्चर निहाती भाबरे दिया हला तो ताको स्ट्रक्चरलिज्म बोलिका कहा जिवो बा स्ट्रक्चरलिज्म अंडर रे आसीबो. Sohani thinks that since the way of thinking promotes different behaviors, so the thought cannot be a behavior itself. She is a cognitivist, behaviorist, humanist, nativist. तो यार करेक्ट आंसर टी हबो cognitivist. Behaviorists are primarily concerned with. behaviorists माने साधारणतः काहा सहित कंसर्न करिथांती. तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी. इफ ए पर्सन रिएक्ट्स एज हैपेंड व्हाट कॉज दैट रिएक्शन टू हैपन. देन क्वेश्चन टी रही व्हिच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन हाउ एंड व्हाई द माइंड फंक्शंस. बिहेवियरिज्म स्ट्रक्चरलिज्म ह्यूमनिज्म नॉन ऑफ द अबव. तो यार करेक्ट आंसर टी हबो ऑप्शन डी नॉन. हु प्रोपाउंडेड द स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड. एमानक मध्यरु के स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड को डेवलप करछंती से हेले थर्नडाइक. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम द चाइल्ड इज viewed as tabula rasa or blank slate whose life is shaped entirely by experience. ऑप्शन बी रही ए पैसिव बीइंग who can be shaped and molded into any form through conditioning. ऑप्शन सी रही ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर. ऑप्शन डी रही मिनिएचर एडल्ट. तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए टैबुला रासा और ब्लैंक स्लेट इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम. कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम अनुसार गोटे चाइल्ड को एभली भाबरे रिव्यू दिया जाय थाए. हु सेड द माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टैबुला रासा. गोटे चाइल्ड रो मस्तिष्क को ब्लैंक स्लेट बा टैबुला रासा बोली किए कहिछंती. ऑप्शन सी लोके कहिछंती. अकॉर्डिंग टू whom psychology is the positive science of behavior. Option B is the correct answer. J.B. Watson. Okay. Next question टी रही who coined the phrase learning set to describe the phenomenon of learning how to learn. Option D होची यार correct answer. Harry Harlow. Next question टी रही the word soul is derived from the Greek word soul को through आसीची.
Soul is derived from what? Soul is derived from psych. Who is considered to the founder of psychology? Founder of psychology किए? William Wundt. William Wundt होउचंती psychology रो founder वर्तमान. Individual differences have been discussed in Plato's what? Plato गोटे बही लिखिचंती तार ना होची रिपब्लिक. ओके सेथिरे ही से डिस्कस करिचंती इंडिविजुअल डिफरेंस संपर्क रे. ओके देन देखिबा साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल. द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक शब्द रो आसीची. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिची साइकोलॉजी इज नाउ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ व्हाट? द बिहेवियर. साइकोलॉजी इज नाउ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर. Who has established the first psychological laboratory? तो यार करेक्ट आंसर टी हबो William Wundt. First laboratory was established in which city and country? तो यार करेक्ट आंसर टी हबो Leipzig, Germany. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिची फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इन इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड इन केउंठार रहिची ना कोलकाता रे. हु हैव एस्टाब्लिश्ड द फर्स्ट लैबोरेटरी इन इंडिया? किए प्रथम करिकी भारत रे लैबोरेटरी तयारी करथिले? से हेले एन सेनगुप्ता. ब्लैक बॉक्स थ्योरी ऑफ माइंड इज रिलेटेड टू. ब्लैक बॉक्स थ्योरी ऑफ माइंड कहा सहित रिलेट करि थाए ना बिहेवियरिज्म सहित रिलेट करि थाए. ठीक अच्छी तो सांग माने वर्तमान जो मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन आम पाई थिला. आई होप कि निहाती भाव में आज ए वीडियो माध्यम आपन को ए टॉपिक टी भल से बुझे पारिछि. तेबे वर्तमान क्लास टी को एठी रखुछि. थैंक यू.